Good morning to all of you. Is my voice is audible? Yes, sir. Okay, so we will wait for others to join. So, let me finish the attendance part. You can scan the QR code here for the attendance. Or please share. Okay, I just set the attendance, so you can mark your attendance there. Right? Yes, I think most of you are joined. So, if my screen is visible to all of you, Yes, sir. so what we are discussing in the previous class, so where we are at, कहाँ पर खत्म किए थे? So we discuss a problem regarding the priority queue. Yes or no? Priority queue का एक problem solve किए थे. Yes, sir. ओके, सो प्रायोरिटी क्यू में याद रखना है आपको, प्रायोरिटी क्यू जो है आपका दो टाइप के होते हैं. एक प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव. अगर अराइवल टाइम आपका दिया होगा, अगर अराइवल टाइम अलग अलग होगा तो उस केस में वो प्रिमिटिव हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर अराइवल टाइम किसी का ऐसे है आपका सपोज 80 एंड 80 ETN process है. Suppose the process are P0, P1, P2, and arrival time of this process suppose 0, this is 1, this is 2, and suppose burst time is 10, burst time is 5, burst time is 3. ठीक है. Now what will happen? अब इसको बनाएंगे तो प्रायोरिटी बेसिस में. Suppose priority of this will be 2, this will be 1, and this will be 3. Fine. ये प्रायोरिटी बिट हो गया आपका. Now suppose when you draw the Gantt chart, so what will happen? So जैसे टाइम 0 में कोई भी प्रोसेस नहीं है तो हम लोग P1 को असाइन कर देंगे. क्लियर. P1 को असाइन कर दिए. फाइन. लेकिन अभी क्या हो रहा है, टाइम 1 में, टाइम t इक्वल टू 1 में हम लोग के पास कितने प्रोसेस है? एक P1 है, एक P2 है.
ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी किसका कम है, P1 का कम है, ठीक है नहीं, P1 का प्रायोरिटी क्या हुआ 1 है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे, मतलब P1 को निकाल देंगे और उसके बाद सॉरी P0 है, P0 का असाइन कीजिए पहले, अब P0 को निकाल देंगे, नाउ विल असाइन P1। फाइन, तो याद रखना है जब प्रायोरिटी क्यू में अराइवल टाइम दिया होगा देन यू हैव टू फॉलो द primitive basis. Okay, if all the processes are arrive at the same time, then you have to go for the based on the priority, then it will be a non-primitive. So is it clear to all of you this point? सर Yeah. P0 को कट क्यों की? यहाँ P0 था ना, कट इसलिए किए, देखो जब टाइम T1 हुआ, T इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, अब मेरे पास कितने प्रोसेस है, P0 भी अवेलेबल है और P1 भी अवेलेबल है, क्योंकि क्या हुआ P1 आ गया उस टाइम पर। अब प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, P1 का कितना है, P1 का आपका 1 है और P2 का 2 है। फाइन, अब मेरा सीपीयू में जा, सीपीयू में पहले कौन था, P0 था, लेकिन अब नया प्रोसेस आया P1, उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करेंगे, दैट मींस वी विल रिमूव P1, सॉरी वी विल रिमूव P0 एंड वी विल असाइन P1। राइट, अभी क्या किया हम लोग, P0 को निकाल रहे हैं, कट नहीं किए, मतलब ये 0 से 1 तक है, उसके बाद क्या होगा आपका P1 होगा, कब तक होगा 10 तक, मतलब 11 तक होगा, उसके बाद फिर से आपका P0 आएगा, ठीक है, इसका फर्स्ट टाइम भी था 5 था ना, इट विल बी 6, नाउ P0 आएगा, इट विल बी 9, विच विल बी 9 plus 6, which will be how much we will add, अगर 6 में 9, so it will be 15, then it will be 3, which will be 18, like this. Clear? The Gantt chart will be like this. Okay, पहले P0 सर आप P is equal to 1 में P0 और P1 ही क्यों लिखे और P2 क्यों नहीं लिखे? okay, so let me clear this question, इसको solve भी कर सकते हैं, ठीक है। Now write down the question. Write down the question. Find the average waiting time and average turnaround time for the given process using priority scheduling, ठीक है। Now suppose the process are, now there is a process, okay, now there is arrival time, there is a burst time, and there is a priority bit. Fine, now the process are, suppose P0, P1, P2, other process, ठीक है। Now suppose the arrival time is 0, let me take as 3, and suppose this is 5. Fine, the burst time is suppose 10, this is 5, this is 3, ठीक है। The priority bit are 2, priority bit is 1, and priority bit is 3. Clear? If the question is clear, so what will happen now, we have to find the average waiting time and average turnaround time. So I have to find the Gantt chart for this one. ठीक है, clear? Now at time T0, अब मुझे बताओ time T0 का how many process are available? Only one process is available, which is P0, है कि नहीं। टाइम जब T0 था, कितने प्रोसेस आए थे सिस्टम में, एक ही प्रोसेस आया था जिसका नाम है P0। तो क्या हम इसको असाइन करेंगे, हाँ असाइन करेंगे, क्योंकि सिस्टम आइडियल नहीं होना चाहिए, तो आई विल असाइन P0 हियर। फाइन, कब तक असाइन करेंगे, जब तक नया प्रोसेस नहीं आ जाता, तो आपका 0 से स्टार्ट होगा, कब तक असाइन करेंगे, जब नया प्रोसेस नहीं आता है। नया प्रोसेस कब आया, देखो टाइम T इक्वल टू 3 में और T3 में आया, टाइम 3 में कितना है, नया प्रोसेस आया, तो टाइम 3 में हम लोग के पास दो प्रोसेस है, एक आपका P0 है और एक आपका नया प्रोसेस आ गया है, क्या है, P1। फाइन, क्लियर, इट इज वेरी सिमिलर टू द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी आप चेक करोगे, तो आपका 0 से लेके कितने तक चलेगा, 3 तक चलेगा, तो टाइम रिमेनिंग कितना बच गया इसका, 7 में से 3 मिनट काम कर लिया, मतलब सॉरी 10 में से 3 मिनट काम कर लिया मतलब, और 7 मिनट काम करना है, ठीक है। अब ना कमिंग बैक, टाइम 3 में कितने प्रोसेस से, 2 प्रोसेस, इसका प्रायोरिटी क्या है, 2 है, इसका प्रायोरिटी क्या है, 1 है, ठीक है। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या बोलता है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसको हम असाइन करेंगे, है कि नहीं, आई एम करेक्ट। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या बोलता है, द प्रोसेस व्हिच इज हैविंग हाई प्रायोरिटी दैट शुड बी असाइंड, सो आउट ऑफ दिस 2 व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, प्रोसेस P1 इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ओके। So what will I will do, I will assign the process P1 to it,
ठीक है, कब तक असाइन करेंगे, जब तक नया प्रोसेस नहीं आता है। नया प्रोसेस कब आया, टाइम t इक्वल टू 5 में आया, टाइम t इक्वल टू how much 5 में आया। now how many process are available, now I am available p0, now I am available p1 and I am available p2। ओके, 5 में आया मतलब ये 2 यूनिट्स ऑफ टाइम काम करेगा, it will work up to 5। तो लेट मी माइनस 2 यूनिट काम कर लिया अगर, तो कितना बचेगा 3। ठीक है, इसका प्रायोरिटी क्या है 2, इसका प्रायोरिटी क्या है 1, इसका प्रायोरिटी क्या है 3। सो विच इज हैविंग हायर प्रायोरिटी, p1 is having the higher priority, so what I will do, I will assign p1। ठीक है, अब नया प्रोसेस नहीं आया, मतलब it will be your normal execution, so I will assign totally to p1 to 3 unit which will be 8। ठीक है, so p1 is completed। okay, p1 is completed, then next क्या है p2, p0 and p2 which is highest priority, p0 is highest priority, so I will assign p2 to it। so how many it will work, it will go for the 7 unit which will be your 8 plus 7 is 15, finally it will be p3 for the 3 unit which will be 18। is it clear how all of you how we are done, now is it clear, Yes, sir. clear। तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग with primitive। okay, if arrival times are different, if arrival time will be different, then you have to perform the primitive। now we can find the waiting time now, so what is the waiting time, बताओ waiting time क्या होगा। so what is the waiting time of p0, p0 का waiting time कितना होगा बताओ कोई, और यहाँ पर 0 है, 5. yes, now p0 it will be p0, ये p0 है, ठीक है, now this is p2। so what is the waiting time of p0, now if I draw this Gantt chart again, okay, it will be something like p0 यहाँ पर 0 से 3 तक, now there will be p1, so I am merging this two, दोनों को ऐड कर दें, so it will be 8, now again there will be p0 which will be 15, right, now there will be p2 which will be 18। now what is the waiting time, you can see यहाँ पर तो 0 है p0 का, next p0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो कहाँ से वेट करना स्टार्ट किया, वो 3 से लेकर 8 तक वेट किया, है कि नहीं, 3 से स्टार्ट किया वेटिंग कहाँ तक 8 तक, तो इट विल बी 8 minus 3 which will be 8 minus 3 which will be 5। and what is the waiting time of p1, p1 will be how much, anyone, 0. 0, because 0. कब स्टार्ट कर रहा है, 3 से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अराइव कब हुआ है, 3 से अराइव हुआ है, इसलिए 3 minus 3 waited for 3 amount of time but it is arrive on 3 which will be 0। so what is the waiting time of p2, p2 कब असाइन हुआ है, p2 असाइन हुआ है 15 में, 15 में असाइन आया है, लेकिन अराइव कब हुआ 5 में, इट विल बी 10। so what is the turnaround time, now I can add this to 10 plus 15, 10 plus 5 is 15, 5 plus 0 is 5 and 3 plus 10 is 30। now to find the average will be 15 by 3, this one which will be 5 millisecond average waiting time, and this will be 2033 by 3 which will be 11 minutes। I hope it is clear to all of you what I try to understand। so को याद रखना है primitive scheduling जो है, सॉरी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है वो प्रिमिटिव भी हो सकता है या फिर नॉन प्रिमिटिव बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम। ओके, जस्ट नोट डाउन दिस एग्जांपल, all of you note down this example। so any doubt you can ask me, any doubt, so there is a problem यहाँ पर, एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जब यूज करते हैं यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, कैन एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है। yes, there is a drawback or problem with priority scheduling, can anyone explain what is the problem here।
Now take an example. Okay, let me explain with an example. Now suppose there is a 5 process. Okay, process P1, P2, P3, P4 and P5. ठीक है, ध्यान से सुनना. और हम लोग को प्रायोरिटी बिट है सपोज 1, 2, 3, 4 and 7. ठीक है, 4, 3, 1, 2, 3, 4 and 7. Fine. Okay. Now suppose you want to execute this one. Now suppose I want to execute this process using priority scheduling. Okay. Now suppose P1 is completed, P2 is completed, P3 is completed. So after P3, suppose one new process is arrived, which is P6. Suppose it is having the priority of 1. Okay. तो P3 के बाद, ठीक है, अगर नया प्रोसेस आया P6 जिसका प्रायोरिटी 1 है, तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? किसको एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट? ऑब्वियसली P6. Now suppose after completion a new process will arrive. Suppose P7. Suppose its priority is 2. Then which process is going to again execute out of P7. P7. Suppose one more process is arrived P8. So if the priority is 3, so which is going to execute? Obviously P8. Now suppose execute this process is continue. This arriving of process is continue. ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो भी नया प्रोसेस आ रहा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा आ रहा है तो हम उसको प्रेफरेंस करेंगे. ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, ये जो आपका प्रोसेस P4 एंड P5 का क्या होगा, वो they will never get a chance to execute. Yes or no? है कि नहीं? अगर ऐसा केस आ गया, this is a scenario, ठीक है, which is whatever the process is coming, they are having the high priority. So what will happen? That process will be allocated to CPU. Then what will happen? The process with the lower priority, ठीक है, the process with the lower priority, the system will not get a chance. ठीक है, क्या होगा, आपका जो प्रोसेस जो था लोअर प्रायोरिटी का, उसको कभी चांस ही नहीं मिलेगा. मतलब वो प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, नाउ दिस इज ए ड्रॉबैक. अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टार वर्जन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टार वर्जन प्रॉब्लम. स्टार वर्जन क्या होता है? If the process is waiting for very long amount of time, or if the process will not get a chance to execute for very long amount of time, this is called a drawback of priority queue, and the term is known as star version. Okay, how the problem can be resolved? The problem can be resolved by edging. Okay, A-G-I-N-G, edging बोलते हैं. So what the edging will be? Edging क्या बोलता है? If the process is waited for a long amount of time, then we will increase the priority of the process so that they will get a chance to execute. ठीक है, so what the edging? Edging क्या बोलता है? Edging is a technique. Okay, edging is a technique which is applied to the process. So when we apply, if the process which is waiting for longer amount of time, जो प्रोसेस काफी देर तक वेट कर रहे हैं और उसको चांस नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? We will increase the priority of that process so that it will be clear. Fine. So this is a drawback. हमेशा पूछता है, what is the drawback of priority queue? Priority queue का drawback होता है स्टार वर्जन होता है, which is nothing but the process with the lower priority may does not get a chance to implement, because if there is a process with higher priority is arrived, then they have to implement that one. Then how this problem can be resolved? This problem can be resolved with a technique called edging. Edging is nothing but if the process is waiting for a longer amount of time, then we will increase the priority of the process so that they can execute. Is it clear to all of you? These two terms? Is it clear to all of you, these two terms? Yes, sir. Okay. Okay, so you can see here, so what we are I just explained. Okay, so the problem of this type of
priority scheduling is star version. Okay, star version बोलते हैं, that means the lower priority process may never get executed. ठीक है, जो हमने अभी समझाया आपको वही चीज होता है. Then what is solution? Solution is called edging. ठीक है, so edging is nothing but as time progress increase the priority of the process. Fine. So these two terms we have to remember because again in deadlock when we go to study deadlock again we use these two terms. Star version means अगर कोई भी process execute नहीं होगा उसको बोलते हैं star version. ठीक है. So now let's move to the next algorithm which is called your round robin. Okay. So RR algorithm बोलते हैं, round robin बोलते हैं. So let me explain the concept. First of all, now it is a primitive one. Okay. Now first of all, this round robin is your primitive process. Okay. Primitive means that can be CPU can be saved among the different process. So what happened in the round robin में क्या होता है? ठीक है. Now we will define a time quantum. ठीक है. Small time quantum define करते हैं. Okay. So we will denote the time quantum by t. So now what will happen? Now each process will get exactly that much amount of time. Okay. So अगर मेरे process से suppose time quantum हमने decide किया 4 millisecond. Okay. Suppose I'm saying the time quantum is 4 millisecond. Now suppose there is 3 process P1, P2, P3. Okay. P1, P2, P3. Now suppose this is you are having 10. First time is 10. First time is 10. First time is 5 and first time is 8. So what will happen now? So it is very similar to first come first serve. Okay, first serve के basis में ही काम करता है. मतलब जो process पहले आया है वो पहले assign होगा, but with the time quantum. Okay, you can say round robin is nothing but first come first serve algorithm with the time quantum. That means if the time quantum is 4 seconds, so what I will do, I will assign the first process. I will assign first process P1 to the CPU. ठीक है, कब तक असाइन करेंगे? जब तक 4 सेकेंड. आफ्टर 4 सेकेंड आई विल रिमूव इट. ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड आई विल रिमूव दिस प्रोसेस P1 and place in ready queue. So what will happen? It will remaining time will be 6. So I remove this one. I will assign new process which is P2. Fine. Then again P2 कब तक रहेगा? Exactly for the 4 second. Now it will be again after 4 second it is removed. I will place this in ready queue and remaining time will be 1. The next process will be P3. So how many seconds you have to place the P3? Exactly 4 millisecond because we have defined the time quantum. मतलब इस time quantum के बाद आपको दूसरे process को context switch करना ही करना है. So I will remove. I will assign P3. Then how much time? 4. It will be 4 amount of time. So again किसका टाइम आएगा ना? P1, P2, P3 कंप्लीट हो गया. अगेन टाइम कैसे आएगा? अगेन इट विल बी विल असाइन P1. ठीक है, क्योंकि ये जो क्यू में क्या था, once it is removed again the P1 is placed in a queue. So again I will assign P1 for how much amount of time? Exactly 4 amount of time. So after 4 it will be remaining amount is 2. उसके बाद किसको असाइन करेंगे? P2 को. Okay. Now how much amount of time will the P2 will be spent? Now how much amount of time? कितना amount of time? Yes. How much amount of time? So it will be 4 and 1. Now you can see how much amount of time it is required. 1 amount of time. Maximum allocation कितना कर सकते हैं? 4 millisecond. ठीक है, इसको maximum कर सकते हैं 4, लेकिन उसको चाहिए कितना? 1 चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा? Now P2 will be remain for only 1 millisecond. Okay. तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, अगर उसका time required to finish is less than the time quantum, so we will not wait up to the time quantum. So we will only wait how much time it requires. मतलब 1 second के बाद P2 को निकाल देंगे. तो again क्या होगा? P3 how much amount of time? 4 amount of time. So it will be 0. So that means it finished. So finally again P1. Okay. So why it is called round robin? Now you can see each process are rotated in some sequence. That means पहले P1, फिर P2, फिर P3, then again P1, फिर P2, फिर P3, again P1, P2, P3. Now the process will continue until all the process, that is this entire thing is continue till all the process are executed. And remember, each process will
get a chance or allocated a maximum amount of time, which is called your time quantum. Okay, the term you have to remember here, time quantum. And what data structure we will going to use to store the element? Can anyone say me? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे रेडी क्यू में यहाँ पर? So what data structure for to storing the process in a ready queue? So what type of data structure we will use? So we will use circular queue here. ठीक है, circular queue use करते हैं क्योंकि once we reach to the P3, again we have to go to the P1. Yes or no? So this process will be continue. इसलिए यहाँ पर instead of using normal queue for the ready queue, we will use the a circular queue. Okay, the data structure used to implement the round robin algorithm is called circular queue because we have to follow again and again. Fine. Second term आपको यहाँ पे आता है time quantum. Now time quantum should be fixed. Okay, that means how much amount of time each process is given. That means after that amount of time the process will be removed. Third thing you have to remember, it is nothing but first come first serve. Okay, it will apply the concept of first come first serve with time quantum. With हम लोग time quantum के साथ apply करते हैं. Then next you have to remember, it is a primitive. Okay, it is a primitive. Which type of algorithm is one? So this is primitive type. Okay, primitive algorithm. Fine, because after the time quantum is completed, you have to remove this one. Fine. Now one important point you have to note here. Now this point, if n process are in ready queue, suppose I'm saying there is n number of process. Okay, P1 से लेकर P2 Pn तक है आपका प्रोसेस. ठीक है, and time quantum is q. If I'm saying time quantum is q, that means each process will get exactly how much amount of time? Q amount of time. Then how long the process will wait to get again its chance. That means अगर एक बार P1 execute हो गया है तो P1 कितना amount of time वो wait करेगा? So it will be the so if there is an n process, so how much amount of time the total remaining process will be n minus 1? Yes or no? अगर n process है, ठीक है, अगर P1 का अगर टर्न निकालेंगे, once the P1 is completed, next टर्न आने के लिए वो कितना टाइम वेट करेगा? So it will be wait for the n minus 1 process to execute, and each of this process will take how much? In the worst case, it will take q amount of time. So this is your the amount of time the process n will wait to get a chance again. Okay, ये चीज याद रखना. अगर n process है और time quantum क्या है? q है. ठीक है, तो n को फिर से टाइम आने के लिए, n का चांस फिर से आने के लिए, how much time will the n will be wait? Okay, so if there is n process, तो कितना टाइम वेट करेगा? तो रिमेनिंग n minus 1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए वेट करेगा. और वर्स्ट केस में क्या होगा? ईच ऑफ दिस n minus 1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट q amount of time. वर्स्ट केस ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना स्पेंड करेगा? q, because q is a time quantum. Now this will be the minimum amount of time the process will wait again to get its chance. So is this point is clear to all of you? What is q into n minus 1? Why I'm writing q into n minus 1? Is it clear? So Yes, can you sir. once Yeah. again? Okay, one second. Suppose I'm saying there is an n process. Okay. Now round robin concept is clear to all of you. How it is implemented. So, Yeah. so we have given time quantum 4 seconds, 4 milliseconds. Yeah. Time So, so अगर P1 का 2 seconds बच जा रहा है तो वो प्रोसेस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? कंप्लीट होगा. देखो अगर इसको यहाँ पर बोल रहे हैं ना, ये केस में बोल रहे हैं. यस सर. हाँ, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको फिर से वो वेट करेगा उसके टर्न आने के लिए. इसका टर्न आने के लिए फिर से ये प्रोसेस वेट करेगा. जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा. आपको बस एक चीज याद रखना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम 4 मिलीसेकंड स्पेंड करेगा. लेकिन अगर इस केस में देखो, जब सेकेंड टर्न जब आया था P2 का, उसको टाइम कितना चाहिए था? 1 मिलीसेकंड चाहिए था. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना स्पेंड कर सकता है? 4.
ठीक है, तो वहां पर वो 1 मिली सेकेंड ही वेट करेगा, नॉट 4, बिकॉज 1 के बाद तो कंप्लीट कर लिया ना, तो सीपीयू आइडल क्यों रहेगा। ये तो ठीक है, टाइम क्वांटम जो होता है मैक्सिमम टाइम एलोकेट। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस वन, सपोज देयर इज एन प्रोसेस है, हम लोग के पास एन प्रोसेस है, अभी हम लोग को क्या पता करना है, क्या फाइंड करना है आपको, एक प्रोसेस का नेक्स्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ टाइम वो वेट करेगा। ठीक है, एक प्रोसेस सपोज P1 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मतलब once we have made the context switch, or how much time the one process will wait to get its turn। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को सपोज देयर इज n नंबर प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को कितना अमाउंट ऑफ टाइम वेट करना पड़ेगा उसका टर्न आने के लिए। तो हम लोग बोल रहे हैं अगर Q इज योर टाइम क्वांटम, Q इज योर टाइम क्वांटम। ठीक है, सपोज आई एम सेइंग n0 अभी जस्ट एग्जीक्यूट हुआ है, अभी बाहर आ गया है। ठीक है, तो n0 का नेक्स्ट टर्न आने के लिए वो कितना वेट करेगा, n-1 प्रोसेस का एग्जीक्यूट होने के बाद आएगा, है कि नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ n प्रोसेस है, ठीक है, और पहला प्रोसेस n0 है, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस कितना बचा मेरे पास, n-1, है कि नहीं। तो वो पहले तो वेट करेगा n-1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, और ईच प्रोसेस कितना टाइम लेगा, ईच ऑफ दिस प्रोसेस विल टेक, इन द वर्स्ट केस कितना टाइम लेगा, वर्स्ट केस में वो लेगा टाइम q, because each of this process will take a time quantum. So how much time the process will wait, each process should wait maximum amount of time. This will be the maximum amount of time that each process will wait to get its turn। ठीक है, मैक्सिमम क्यों बोले, अगर कोई प्रोसेस 4 से कम लिया, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस 4 से कम भी ले सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये प्रोसेस क्या हुआ, नेक्स्ट टर्न में कितना लिया, 2 लिया और 1 लिया, तो ये 4 से कम लिया, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं है। नाउ दिस विल बी योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, इसलिए बोले फर्स्ट केस। ओके, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस वेट, राइट। सो लेट मी do the example, it will be very much clear to you. So just remember this points, okay, it is also called first come first serve with time quantum। ठीक है, we basically use the ready queue। okay, there must be a time quantum नहीं हो तो नहीं कर सकते, and it is a primitive algorithm। fine, so let me solve an example so it will be clear to you how we are doing। Now, one more thing you remember, that time sharing environment जो पढ़े थे ना हम लोग, multitasking, the multitasking procedure can be achievable with this round robin only। okay, now let us consider this example। okay, now let us consider this example, so these are the process and these are the burst time is given। now what is the time quantum given, so what is the time quantum is given t equal to 20। ठीक है, टाइम क्वांटम जो दिया हुआ है t इक्वल टू 20 का। सो लेट मी ड्रॉ द ग्रैंड चार्ट फर्स्ट। तो ग्रैंड चार्ट जब हम बनाएंगे, ओके, केयरफुली लिसन हाउ आई एम डूइंग। फाइन, सबसे पहला प्रोसेस कौन आया है, P0 आया है, तो क्या करना है हम लोग को, P0 को असाइन करना है, सॉरी P1 को असाइन करना है, तो P1 को सर असाइन करके कितने अमाउंट ऑफ टाइम करेंगे, 20 अमाउंट ऑफ टाइम करेंगे, क्योंकि जो टाइम क्वांटम दिया हुआ है Q इक्वल टू क्या है, 20 दिया है, तो 0 से लेके कितना तक वेट करेगा वो, 20 तक इसको असाइन करेंगे। ठीक है, जब 20 हो जाएगा इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे, प्रीमिट करेंगे बाद, नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम विल बी लेफ्ट, इट विल बी लेफ्ट विद 33। फाइन, नेक्स्ट प्रोसेस किसको असाइन करेंगे, P2 को असाइन करेंगे। ठीक है, P2 को असाइन करेंगे। नाउ P2 को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, नाउ आई कैन अलॉट 20 मिली सेकेंड, लेकिन अभी 17 मिली सेकेंड में P2 का क्या हुआ, टाइम खत्म हो गया, मतलब P2 17 मिली सेकेंड यूज करने के बाद इट विल बी 0, तो P2 विल बी एलोकेटेड अप टू 17, मतलब 20 से लेकर 17 तक एलोकेट करेगा, तो इट विल बी 37। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर देखो 40 नहीं लिखे, 20 से 40 होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन क्या हो रहा है 40 से पहले, मतलब 20 से पहले ही P2 खत्म हो गया है, दैट इज 17 यूनिट, इसलिए हम लोग 20 प्लस 17 विच इज 37। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस विल बी P3। नाउ P3 को मैक्सिमम कितना देना है, 20 मिली सेकेंड ही देना है। नाउ कितना है 68, नाउ 20 देंगे तो कितना होगा ये 57। फाइन, नाउ हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द P3, इट विल बी 48। फाइन,
Now next will be P4. Next will be P4.